this is Kriti and you are watching the NPS Bulletin. COVID-19 has badly affected our lives. Hardly there is anyone untouched from its outbreak. Day by day, we are losing our fellow citizens. The coronavirus is proving fatal for the human race. Our correspondent Deepika Bora and Pramod Kandpal are sharing the similar news. The novel coronavirus disease pandemic has emerged the second biggest cause of death in India in a span of merely 8 weeks, the Institution for Health Metrics and Evolution estimated. COVID-19 overtook heart disease among leading causes of death in the country. The pandemic jumped from the 26th position, causing an average 180 deaths per day or 1,273 a week. इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन IHME के अनुसार नोवल कोरोना वायरस महामारी केवल 8 सप्ताह में ही भारत में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण बन गई है। देश में मौत के प्रमुख कारणों में से कोविड-19 हृदय रोगों को पीछे कर दूसरे स्थान पर आ गया है। यह महामारी 26वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गई, जिससे प्रतिदिन औसतन 180 और सप्ताह में 1273 मौतें हुईं। All of us are helpless in front of the coronavirus. Only the thing we can do is prepare ourselves to fight against it. A model is introduced by Kerala to do so. Our correspondent Pratham Mittal is sharing the news along with the Hindi translation by Riya Chand. Kerala is setting up oxygen war rooms across the state as India fights a frightening surge in COVID cases, which has led to an unprecedented rise in the demand of medical oxygen. An oxygen war room helps in real time smooth supply of oxygen and movement of oxygen containing vehicles through the use of softwares by professionals. कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण मेडिकल ऑक्सीजन की मांग में अचानक वृद्धि हुई है। इसके चलते केरल राज्य भर में ऑक्सीजन वॉर रूम स्थापित कर रहा है। ऑक्सीजन वॉर रूम सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति व ऑक्सीजन ले जा रहे वाहनों को ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने में मदद करता है। Now moving further, our correspondent Deepika Bora is sharing the news. Pramod Kandpal will be sharing the Hindi translation. Bangalore-based EdTech unicorn Byju's and Reliance Industries technology arm Jio Platforms have featured in Time magazine's first ever list of 100 most influential companies. Byju's featured in the disruptors category along with the companies like Tesla and Clubhouse. Jio Platforms featured in the innovators category alongside companies like Moderna, Zoom and Netflix. According to Wikipedia, Time is an American news magazine or news website published and based in New York City. It has been one of the most authoritative and informative guide to what is happening in current affairs, politics, business, health, science and entertainment. पहली बार जारी टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में बायजूस और जियो शामिल। एडटेक यूनिकॉर्न बायजूस और रिलायंस इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी के जियो प्लेटफॉर्म टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल हैं। बायजू का नाम टेस्ला और क्लब हाउस जैसी कंपनियों के साथ डिसरप्टर्स यानी बड़े बदलाव लाने वाली कैटेगरी में है, तो वहीं जियो प्लेटफॉर्म को मॉडर्ना, जूम और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों के साथ इनोवेटर्स की कैटेगरी में रखा गया है। विकिपीडिया के अनुसार टाइम एक अमेरिकी समाचार पत्रिका और समाचार वेबसाइट है जिसका प्रकाशन न्यूयॉर्क शहर से होता है। इसे सबसे अधिक आधिकारिक और सूचनात्मक मैगजीनों में से एक माना जाता है जो वर्तमान मामलों से लेकर राजनीति, व्यापार, स्वास्थ्य, विज्ञान और मनोरंजन पर सूचनाएं देती है। Hearing is the universal alerting sense in all vertebrates. Sound is so important because animals are able to hear events all around them, no matter where their attention is focused. Although hearing is important to all animals, the special qualities of the undersea world emphasize the use of sound, but the human activities are affecting them too.
Our correspondent Pratham Mittal is sharing the news along with the Hindi translation by Pramod. The findings of a new study sheds light on the need to reduce human noises in water bodies, suggesting that humans have changed the ocean soundscape by drowning out natural noises upon which many marine animals, ranging from shrimp to sharks, rely on. Sound travels fast and far in water, and sea creatures use sound to communicate, navigate, hunt, hide, and mate. Since the Industrial Revolutions, humans have introduced their own underwater noises from shipping vessels, seismic surveys searching for oil and gas, sonar mapping of the ocean floor, coastal construction, and wind farms. Global warming could further change the ocean soundscape as the melting Arctic opens up more shipping routes and wind and rainfall patterns change. Yet, noise has been notably absent from global assessments of ocean health. एक नए अध्ययन के मुताबिक जल निकायों में मानव द्वारा जनित शोर को कम करने की आवश्यकता है। मानव द्वारा निर्मित जटिल उपकरणों ने समुद्र के साउंड स्केप को बदल दिया है, जिस पर झींगे से लेकर शार्क तक कई समुद्री जानवर निर्भर हैं। ध्वनि पानी में बहुत तेज़ी से और दूर तक जाती है और समुद्री जीव ध्वनि का उपयोग संचार, नेविगेट करने, शिकार करने, अपने से बड़े जीव से छिपने और दोस्त बनाने के लिए करते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से मनुष्यों ने शिपिंग जहाज़ों, भूकंप की तकनीक से तेल और गैस की खोज, समुद्र तल की सोनार मैपिंग, समुद्रीय जगह पर निर्माण कार्य और विंड फार्म्स ने समुद्र में ध्वनि प्रदूषण को बढ़ा दिया है। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र के साउंड स्केप में और बदलाव हो सकता है, क्योंकि इससे आइस कैप्स पिघलेंगी और शिपिंग मार्ग और हवा व वर्षा का पैटर्न और बदल जाएगा। The curiosity of human makes them unfold all the mysteries. We try to find the reasons behind everything through knowledge and exploration. Long ago, this curiosity made humans reach the moon, and till date, many such space missions are still going on. Our correspondent Deepika Bora is sharing the similar news. Pramod will be sharing the Hindi translation. China has launched a key module of a new permanent space station, the latest in Beijing's increasingly ambitious space program. The Tianhe module was launched from the Wenchang Space Launch Center on a Long March 5B rocket. China hopes to have the new station operational by 2022. The only space station currently in orbit is the International Space Station, from which China is excluded. International Space Station. International Space Station is a space station in outer space in functioning from 22 years. It was established on 20 November 1998. The International Space Station is a large spacecraft in orbit around the Earth. It serves as a home where crews of astronauts and cosmonauts live. The space station is also a unique science laboratory. Several nations work together to build and use the space station. The space station is made of parts that were assembled in space by the astronauts. अंतरिक्ष में अपना स्थायी स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहे देश चीन ने इस स्टेशन का एक अहम मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है। तियानहे मॉड्यूल को लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के जरिए वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। चीन को उम्मीद है कि उसका नया स्पेस स्टेशन 2022 तक बन जाएगा। अंतरिक्ष में इस वक्त पृथ्वी की कक्षा यानी ऑर्बिट में सिर्फ एक ही स्पेस स्टेशन स्थित है, जिसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और इसमें चीन को शामिल नहीं किया गया है। आइए जानते हैं क्या है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बाहरी अंतरिक्ष में बना स्पेस स्टेशन है। आज से 22 वर्ष पहले 20 नवंबर 1998 को ये स्पेस स्टेशन बना था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर चक्कर लगा रहा एक बड़ा अंतरिक्ष यान है। यह एक घर की तरह है जहां अंतरिक्ष यात्री और कॉस्मोनॉट्स रहते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन एक अनोखी विज्ञान प्रयोगशाला है। अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण और उपयोग के लिए कई राष्ट्रों ने मिलकर काम किया। स्पेस स्टेशन उन हिस्सों से बना है जो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अंतरिक्ष में इकट्ठे किए गए थे। This was all about today.
For more such updates, stay tuned with us.